Hello everyone. Today we are discussing about the UGC NET paper 1 June 2025 speed test ICT 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर पर सजाना होगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। यहाँ पर मेमोरी साइज दिया हुआ है। ठीक है, 1 MB 1 KB एंड 1 GB डिसेंडिंग ऑर्डर पर यहाँ पर सजाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट में आएगा 1 GB, उसके बाद 1 MB, उसके बाद 1 KB। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं ट्रूथ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, CPU executes the software directly from the secondary memory. This statement was correct, incorrect। ठीक है, करेक्ट नहीं है। and a software is termed as a open source software if can be downloaded from the internet. It is also incorrect. So option number 2 was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम A2 फायरवॉल। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैक V3 and memory like the ROM C4 and communication email D1। ठीक है, so option number 3 was the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है। ठीक है, मेन मेमोरी A2 डायनामिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड कैche मेमोरी B4 होगा। ठीक है, कैche मेमोरी वाज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड डिस्क C1 होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी एंड CD-ROM वाज ऑप्टिकल मेमोरी D3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेम ऑफ द मेमोरी साइज एंड नंबर ऑफ द बिट्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, MB A3 होगा। ठीक है, 2 to the power 20 एंड GB होगा B1 2 to the power 30 होगा एंड TB टेराबाइट होगा C4। ठीक है, 2 to the power 40 एंड PB पेटाबाइट होगा D2। ठीक है, 2 to the power 50। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। HDD A3 होगा एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एंड B2 होगा रैम वाज ए वॉलेटाइल मेमोरी एंड रोम वाज नॉट राइटेबल मेमोरी। ठीक है, C4 एंड CRT विजुअल डिस्प्ले यूनिट D1। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कैचे मेमोरी होगा 3 हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मेन मेमोरी B1 होगा इंटीग्रेटेड सर्किट DRAM। ठीक है, एंड हार्ड डिस्क C4 होगा मैग्नेटिक सरफेस एंड CD-ROM लेजर डिस्क। ठीक है, सो D2। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट which of the following output of the following Microsoft Excel formula? Option number 3 was the correct answer। option number 1 was the correct answer 3। ठीक है, next what is the sum of the binary base 2 number 1100 and hexadecimal यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा F16। ठीक है,
बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है शाम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 11001। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ zeros and ones can be made with a 5 binary digit code। ऑप्शन नंबर 2 32 was the correct answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which are the following true of the random access memory or RAM, ठीक है, in computer system। ऑप्शन नंबर 4 was the correct answer। RAM is a volatile and amount of the RAM is computer system can affected its performance, ठीक है। so ऑप्शन नंबर 4 was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ये देखना चेक करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, हार्ड डिस्क इज ए सर्कुलर पैटर्न कोटेड इन मैग्नेटिक मटेरियल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या बोला जा रहा है, एक्सेस टू द डेटा इज faster than with the RAM, it is incorrect। so question number option number 3 was the correct answer। statement 1 is true but statement 2 is false, ठीक है। next question number 13, dash are used to measure both computer memory RAM and storage capacity of the floppy disk, CD-ROM drives and hard drive, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 bytes are the correct answer, ठीक है। next question number 14, which of the following is or are the main of a computer, main memory of the computer। इसका राइट आंसर होगा ए रैम होगा एंड ए ओनली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का नेक्स्ट, two binary numbers are added the follows, then ABCD is equal to what। ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, which type of the virus or destructive software would appear to useful but will actually causes the damage once installed or run by the users। ऑप्शन नंबर 3 ट्रोजन हॉर्स was the correct answer क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which channel of the Swayamprabha deals with the social science, social and the behavioral science 1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रबोध, ऑप्शन नंबर 3 प्रबोध, प्रबोध चैनल 03, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, स्वयं प्रभा चैनल नंबर एंड नंबर ऑफ द चैनल दिया हुआ है, मैच करना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं चैनल 01 होगा A4 भागिश एंड चैनल 02 होगा B1 संस्कृति एंड चैनल 03 प्रबोध C2 एंड डी ऑप्शन नंबर चैनल नंबर 04 होगा सरसत D3। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर, शॉर्ट मैसेज सर्विस वाज द करेक्ट आंसर, SMS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हैं मेमोरी यूनिट एंड बाइट्स इक्विवेलेंट यहाँ पर मैच करने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 A2 होगा, ठीक है। किलोबाइट्स A2 103 बाइट एंड मेगाबाइट होगा B1 106 बाइट एंड गीगाबाइट होगा C4 109 बाइट्स एंड टेराबाइट होगा 112 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट,
स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैच करने के लिए बोला गया है, ये वो देख सकते हैं। SSD और सॉलिड स्टेट ड्राइव ये 3 होगा, ठीक है। has no moving part, is therefore very robust and reliable technology, and B 4 होगा, ठीक है। नॉन volatile in nature and store the firmware, and DVD RAM C1 होगा, ठीक है। ऑप्टिकल मीडिया uses the user centric concern track they allow the simultaneous read write operations, and RAM होगा volatile in nature, ठीक है। D2। So option number 2 was the correct answer, क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है। द ट्विटर इज द एग्जांपल ऑफ द वेब 2.0, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड वेब 2.0 was refers to the static text based information website, it is incorrect, so option number 3 was the correct answer, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यह देख सकते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग को दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A2 होगा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूजर्स टू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर पर्सन्स कंप्यूटर एक्टिविटी, एंड B4 फायरवॉल वाज B4 होगा, ठीक है। हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट देयर नेटवर्क बाय कंट्रोलिंग द डेटा कैन और कैन नॉट इंटर, ठीक है। एंड C1 होगा, ठीक है। ब्लूटूथ होगा द वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग द डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, एंड डिनाइल्स ऑफ सर्विस D3 होगा। एन अटैक ऑन ए नेटवर्क व्हिच इन्वॉल्व द फॉरवर्डिंग द नेटवर्क यूजलेस ट्रैफिक, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा सनराइजेशन दिया हुआ है। ए कंप्यूटर नेटवर्क ए मोडेम इज कंसीडर द बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एंड रीजन बोल रहा है कि मोडेम सेंड डेटा अपलोड एंड आउटपुट and receive the data download and input is the same time, so both assertion and reason correct, and correct explanation भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 was the correct answer, क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, GPS is determine the exact location of the vehicles or other forms of the transport, this statement is correct, but statement 2 GPS system was not heard since the driver have to consult the maps, it is incorrect, so option number 3 was the correct answer, ठीक है। कैचे मेमोरी मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, कैचे मेमोरी वाज A3 होगा, ठीक है। हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड मेन मेमोरी B1 होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट DRAM। हार्ड डिस्क C4 होगा, मैग्नेटिक सरफेस CD रोम होगा, लेजर डिस्क, ठीक है, D2। so option number 1 was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का, which of the following converted a digital data to digital signal, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिजिटल ट्रांसमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा बोला जा रहा है ए बिटमैप फाइल द फाइल फॉर्मेट dot bmp is not suitable for the graphics on the website, this statement is correct, and the bitmap graphics store the information about every individual pictures elements like the pixel making up the image, thereby giving the with large files, both are correct and correctly explained कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 was the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which of the following file format contains the exclusively the ASCII file format, option number 2 was the correct answer, BDE, RTF, CSV, and TXT was the correct answer, option number 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, with regarded to the computer memory, which of the following statement is true,
ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड सी वाज द करेक्ट आंसर। ए secondary memory is the slower and cheaper and less volatile than the primary storage. It is correct. And the contents of the most forms of the RAM is volatile, thus making this unsuitable long-term data storage. So option number 3 was the correct answer. A and C only correct, or the other option was incorrect. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज को मैच करने के लिए क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा ई, ठीक है, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट दिया हुआ है 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? ए वेब ब्राउजर इज अ पीसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट रिसीवर्स एंड display web pages. This statement is as correct. And statement 2, a search engine is a special kind of the website that helps the people to find the web pages from the other websites. This statement also correct. So option number 1 was the correct answer. ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है। सो HDD A3 होगा, एक्सटर्नल मेमोरी, एंड रैम होगा नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, B4 B2 होगा वॉलेटाइल इन नेचर, सॉरी, रैम होगा वॉलेटाइल इन नेचर, रोम होगा नॉन राइटेबल, एंड CRT विजुअल डिस्प्ले यूनिट D1। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं A, C and D was the correct answer. Laser printer use dry ink. It is correct. And the unlike the dot matrix, the inkjet printer was a laser printer does not or do not use the ink when they are processing the documents. So option B was incorrect. But statement C, laser printer use the property of the static electricity. It is also correct. And the laser printer produce the ozone gas of the tiny toner of the particular in the air. This statement is also correct. So option number 2 was the correct answer. Yes, C and D was correct. ठीक है। Next question number 35, DRAM is a consist of the number of the transistors and capacitors. This statement was correct. And statement 2, DRAM needs to the consistency of the refresh. It is also correct. So option number 1 was the correct answer क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट ऑफ द गीगाबाइट्स? ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। 2 to the power 33 बाइट्स वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है। USB ड्राइव वाज नोन एज द फ्लैश ड्राइव, एंड it is this statement was correct. And statement 2, device uses by the banks to automatically read the unusual number at the bottom of the check and depositable slips is known as the MICR. This statement is also correct. So option number 1 was the correct answer question number 37 का। Next question number 38, hypertext transfer protocol is, option number 4 was the correct answer, fetching and the HTML document from a website was the correct answer, option number 4. Next question number 39, which of the following statement was regarding the internet are correct? The internet can be accessed from the anywhere and by anyone. It was incorrect. The internet has the public access. It is also incorrect. They are more secure than internet. It is correct. And the internet is possible to control the external links. It is also correct. So option number C and D was the correct answer. ऑप्शन नंबर 2 was the correct answer. C and D correct. ठीक है। इंटरनेट के बारे में, इंट्रानेट के बारे में था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 was the correct answer. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एमबी, यहाँ पर एमबी A3 होगा। ठीक है। 220 बिट्स
एंड GB 230 बिट्स एंड TB C4 होगा 240 बिट्स एंड PB 250 D2। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 आज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो डन। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर माई वीडियो। थैंक यू अगेन।